We'll be continuing our chapter of circles. This is class 9th NCERT and the topic is circles. My name is Hinan and you can reach me on this email ID. Alright. तो आज हमें पढ़ना है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट. So today the topic will be angle subtended by chord at a point. तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, we studied the different parts of a circle. If we can revise, तो हमने पढ़ा था that this is called the circumference. This is the center of the circle. From the center to any point on the circumference, तो इसको हम रेडियस बोलते हैं. और दो रेडियस के बीच में जो एरिया बनता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं. और एक कॉर्ड होता है. कॉर्ड सर्कल को पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड this part is known as, this whole part is known as the major segment and the smaller one is known as minor segment. Right, let me rub all this. तो हमें पढ़ना है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट. तो अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, लेट्स नेम दिस पी क्यू एंड लेट्स हैव अ पॉइंट आर है. तो ये लाइन पी क्यू इस आर पे एक एंगल सबटेंड करता है. द लाइन पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल एट पॉइंट आर. ठीक है, angle PRQ or you can name it angle QRP. तो पॉइंट आर पे PQ एंगल PQR और एंगल QRP सबटेंड करता है. ठीक है, सो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन PQ. सो इफ़ यू हैव अनदर पॉइंट, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास पॉइंट S है, तो इस S पे ये वाला एंगल सबटेंड करती है लाइन. अब हमें स्टडी करना है कि कॉर्ड जो सर्कल का है वो किस टाइप का एंगल सबटेंड करता है. सो आई विल ड्रॉ अ सर्कल. ऑलराइट, नाउ यू हैव अ chord. Let's have a chord PQ here. Right, this is PQ. This is the center of the circle O. तो पी क्यू सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड करेगी? इट सबटेंड एंगल पी ओ क्यू. ठीक है, अगर कोई दूसरा पॉइंट है, से फॉर एग्जांपल आपके पास पॉइंट आर है सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पे, सो पी क्यू इज सबटेंडेड एन एंगल पी आर क्यू. यहाँ पे ये वाला एंगल सेंटर पे पी ओ क्यू एंगल सबटेंड किया और सर्कमफ्रेंस आर पॉइंट पे एंगल पी आर क्यू सबटेंड किया. इफ़ यू हैव अनदर पॉइंट एस, तो एस पे भी पी क्यू कॉर्ड एंगल पी एस क्यू सबटेंड करेगा, एंगल पी एस क्यू. ठीक है, अब हमें एग्जामिन करना है रिलेशनशिप, साइज ऑफ कॉर्ड, कितनी लेंथ ऑफ कॉर्ड है, और एंगल का. क्या एंगल सबटेंडेड वेरी करता है लेंथ ऑफ कॉर्ड से या नहीं? राइट, ओके. नाउ से फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉर्ड है, लेट्स नेम दिस एक्स वाई, और आपके पास कॉर्ड है, let's name this
लेट्स नेम दिस LM। ठीक है, आप देख सकते हो LM की लेंथ XY से ज़्यादा है, सो LM इज सबटेंडिंग एन एंगल, XY is subtending an angle XOY, ये वाला एंगल XOY कौन सबटेंड कर रहा है? ये सबटेंड कर रहा है एंगल एक कॉर्ड कौन सा? XY। और जो LM वाला कॉर्ड है ये सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है? ठीक है, इट इज सबटेंडिंग एन एंगल, सेकेंड 1 second, LOM, एंगल LOM कौन सा कॉर्ड? LM सबटेंड कर रहा है। आप देख सकते हो एंगल LOM is greater than angle XOY. You also notice that LM is larger in length, longer in length than XY. So LM की length ज़्यादा है XY से. So can we say that angle subtended by longer chords is larger? So we can say that longer the chord, bigger will be the angle subtended by it at the center. All right, now we'll move forward. We'll have the first theorem here. The theorem states that equal chords of a circle subtend equal angles at the center. ये कह रहा है अगर आपके पास दो इक्वल लेंथ के कॉर्ड्स हैं, से फॉर एग्जांपल ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड, इफ दीज टू आर इक्वल इन लेंथ, okay, say for example you have this chord is AB and this chord is CD. All right, they are subtending equal angles at center O. So let AB subtend angle AOB and CD is subtending angle COD. Yeah, AOB and COD. So is angle AOB equal to angle COD? So this we have to prove. All right, the theorem states the equal chords subtend equal angles. So if CD is equal to AB in length, then these two angles will be equal. How can we prove this? So let's take these two triangles. Okay, let's take triangle AOB and triangle COD. ये दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं हम. इन दो ट्राइंगल्स में एक तो AB equal to CD है, this is given. The second thing is OB can be written as equal to OC because both of these are the radii. ये तो रेडियस है इस सर्कल के, radius of circle OB will be equal to OC and OA will be equal to OD. OA will be equal to OD. These are also radius. You can write radii of circle. Okay.
So you have all the three sides are equal, so we can say that triangle AOB is congruent to triangle COD. Why? Side rule. अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं, so these two triangles will be congruent, so which implies angle AOB is equal to angle COD by corresponding parts of congruent triangles. ठीक है, so this theorem holds true. All right, so you can also say that अगर हम इसका ऑपोजिट लिखें, इफ़ वी हैव टू कॉर्ड्स, अगर हमारे पास एक सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं और ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करें, अगर ये 30 डिग्री सबटेंड कर रहा है और ये वाला कॉर्ड 30 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो वी कैन से दैट दिस कॉर्ड इज इक्वल इन लेंथ टू दिस कॉर्ड. ऑलराइट, वी कैन ऑल्सो, वाई कैन वी से दिस? वी कैन से दिस बिकॉज एक तो ये वाला साइड इसके बराबर है, ये दोनों रेडियाई हैं, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये भी रेडियस है. तो इस ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, एक तो साइड बराबर है, एंगल ये दो बराबर हैं और ये वाले दो साइड्स बराबर हैं, तो साइड एंगल साइड कॉन्फ्रेंस रूल से हम कह सकते हैं दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल. ऑलराइट, नाउ we can move to the exercise. All right, so a question says that recall that two circles are congruent if they have the same, this is exercise 10.2, right? Recall that two circles are congruent if they have same radius. ये क्या हमें कह रहा है कि two circles are congruent if they have same radii. दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है जिनकी रेडियस सेम होती है. हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ congruent circles subtend equal angles at their centers. So the question is, we have two circles, this is circle 1, this is circle 2. all right, और ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं. ठीक है, मतलब इनके दोनों के रेडियस सेम है, रेडियस इक्वल है. अगर एक का रेडियस से फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर, दूसरे का भी 2 सेंटीमीटर है. अब ये कह रहा है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. अगर सपोज इस सर्कल पे मैंने ये वाला कॉर्ड बनाया और इस सर्कल पे ये वाला कॉर्ड बनाया, लेट मी नेम दिस ए बी, वी नेम दिस सी डी. सेज दैट इक्वल कॉर्ड्स, ये इक्वल है लेंथ में, सो दिस इज इक्वल इन लेंथ टू दिस. सबटेंड इक्वल एंगल्स, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड करें सेंटर पे. सो दिस इज सबटेंडिंग एंगल दिस ए ओ बी और ये सी ओ डी सबटेंड कर रहा है. ठीक है, एंगल we have to prove that angle, to prove angle AOB is equal to angle COD. This is to prove. All right, so if we take these two circles, ठीक है, if we take triangle AOB लेंगे, in triangles AOB and COD, एक तो AO equal to OC है, OA is equal to OC by, these are congruent circles, so we can write congruent circles have equal radii. Similarly OB will be equal to OD, same, and AB is equal to CD, this is given. तो हम कह सकते हैं that triangle AOB is congruent to triangle COD by, एक तो इनका साइड बराबर है, साइड साइड, सो साइड 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 रूल, which implies angle AOB is congruent to triangle, is AOB is equal to angle COD.
अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बाकी वाले पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है. Corresponding parts of congruent triangles. All right. So this was question number, solution to question number 1. We can move to the next. Now the second question is, prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers, then the chords are equal. So this is exactly the opposite of question number 1. कह रहा है chords of congruent circles. So let me draw two circles, congruent circles जिनके रेडियस इक्वल होता है, ठीक है. Let this be O and इसका center O dash. Chords prove that if chords of congruent circles subtend equal angles, दो chords subtend कर रहे हैं equal angles. So this is one chord of the circle, right? This is another chord. We name this AB. This is CD. ये वहाँ हमें कह रहा है कि that these chords are subtending equal angles at the center. So this chord is subtending, AB is subtending angle AOB at the center, and CD is subtending angle COD. And these two are equal angles. This is given, all right? This is given. This angle is equal to this angle. Now you have to prove that the chords are equal. We have to prove that the chords are equal. AB is equal in length to CD के, ठीक है. So we'll take triangles in triangles AOB and COD. We have OA equal to OC, radii of congruent circles. OB is equal to OD, O dash D, right? Same. And angle AOB is equal to angle COD. This is given. So we can say that triangle AOB is congruent to triangle COD. Why CO dash D? Why? एक तो उनका साइड एक इक्वल है, एक साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, ठीक है. एंड दिस एंगल इज इंक्लूडेड एंगल. ये साइड इस साइड के बराबर है. दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ऑलराइट. एंड द इंक्लूडेड एंगल, इन दो साइड्स के इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल. सो वी कैन से साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से we can say that these two triangles are congruent. You write side angle side rule, which implies AB is equal to CD. Why? Corresponding parts of congruent triangles, right? In the next lesson we'll study perpendicular from center to a chord. तो एक chord से perpendicular from center से एक perpendicular chord तक, like this, right? That will do in the next lesson.